Welcome to Too Easy to Learn। ये स्टूडेंट, इस लेसन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और डेसिमल प्लेसेस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं और उसके क्या रूल्स आइडेंटिफाई करने के, और डेसिमल प्लेसेस और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक टेबल है और मैं इस टेबल को मेजर करना चाहता हूँ। इसकी मेजरमेंट के लिए मुझे मेजरिंग टेप चाहिए। जब मैं इसको मेजर करता हूँ तो मुझे मेजरमेंट्स के जो रीडिंग है मेजरिंग टेप के ऊपर वो 20.3 सेंटीमीटर मिलती है। अब इस जो रीडिंग है, जो मेजरमेंट मैंने ली है, इसके दो पोर्शन है, एक बिफोर डेसिमल है और एक आफ्टर डेसिमल है। तो इट हैज़ 3 डिजिट्स। तो जो बिफोर डेसिमल है वी कॉल इट द रिलायबल डिजिट्स, क्योंकि ये एग्जैक्टली नोटेड है। और जो आफ्टर डेसिमल प्लेस है इट इज़ कॉल्ड अनसर्टन डिजिट। इट कुड बी 0.25 और 0.35। ये ऐसे क्यों हैं, इसको लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और आप वो लेसन ज़रूर देखिएगा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा कि ये जो 0.3 है, ये 0.25, ये 0.35 क्यों हो सकता है, ये क्यों अनसर्टन डिजिट है। तो ये लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के ज़रिए हम इसको समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो 3 डिजिट्स हैं, रिलायबल डिजिट्स 2 हैं और एक हमारे पास अनसर्टन डिजिट्स हैं। ये तीनों डिजिट्स मिलके सिग्निफिकेंट फिगर्स को बनाते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट्स करने में हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। सो व्हेन वी मेजर समथिंग वी कैन नॉट ऑलवेज बी परफेक्टली प्रिसाइज। सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प अस टू शो हाउ एग्जैक्ट आवर मेजरमेंट्स आर। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि हमें मेजरमेंट के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये जो नंबर्स हैं ये मेजरमेंट्स में हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करने में मदद देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को कोई भी आपके पास मेजरमेंट आए तो उनको आइडेंटिफाई करने के रूल्स हैं, 5 रूल है। हम उन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं, और फिर हमने उन रूल्स को मेमोराइज भी करना है। So now rule number 1, all non-zero digits are significant. What does it mean? Here are a few examples. 192 एक मेजरमेंट है, तो हम देखना चाहते हैं कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो इसमें 192 तमाम नॉन ज़ीरो है, दिस इज़ 3। तो इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 17.82, 1 2 3 4 बी बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल तमाम नंबर्स सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। पार्ट सी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, पार्ट डी 1 and 2 सिग्निफिकेंट फिगर। Rule number 2, all zero between non-zeros digits are significant. Let's understand this. ये आपको 2 0, ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो के दरमियान में पैक नज़र आता है, तो दिस ज़ीरो विल बी कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सो इन दिस पार्ट ए देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 is a significant, 0 is a significant, 5 is a significant, and 2 is also significant here. So here again the 0 is packed between 2 non-zero digits, तो ये 0 significant फिगर के तौर पे कंसीडर होगा। तो देर आर 5। नो हेयर दिस 0 एंड दिस 0 ये नॉन ज़ीरो में पैक हैं, नॉन ज़ीरो के अंदर हैं, तो इनके इर्द गिर्द नॉन ज़ीरो हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4 5 and 6। Here again, these 3 zeros are in between 2 non-zero digit 4 and 5. So all these 3 zeros will be considered as significant figure. So there are 1 2 3 4 5. So 5 significant figures in this number. Rule number 3. In a decimal, all zero before non-zero digits
are not significant. Let's see. So in this example, आपके पास जो फर्स्ट 3 ज़ीरो हैं ये नॉन ज़ीरो के दरमियान में पैक नहीं है, दे आर नॉट इन बिटवीन नॉन ज़ीरो, सो ये सब के सब नॉट सिग्निफिकेंट हैं. सो इन दिस नंबर 3 and 1, these are two significant numbers, so there are two significant figures in this number. Part B, डेसिमल से पहले ज़ीरो है, it will not be considered as a significant figure, so there are three significant figures in this number, 8, 0 and 2. Now in this number there are two significant figures, 0 and this 0 is not, these two zeros are not significant, or 5 and 3 are significant, so two significant figures. So in this number this 0 will be considered, this 0 will be considered as a significant, क्योंकि this 0 will be in between two non-zero and this 0 is also in between two non-zero, but the first two zeros are not in between two non-zero digits, so that's why the first two digits are not significant. So in this number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 significant figures. Rule number 4, in a decimal all zero after non-zero digits are significant. So 0.30, तो ये लास्ट वाला ज़ीरो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा. So there are two significant figure. In this number 800, these will be significant figure, three significant figure. All numbers are significant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here again all numbers are significant, 1, 2, 3, 4. So there are four significant figures. So next, rule number 5, without a decimal point the trailing zero in whole numbers are not significant. With decimal point the trailing zero becomes significant. Let's understand this. What does it mean कि without decimal and with decimal का क्या मतलब है. यहाँ पे 4800 इस ज़ीरो के बाद डेसिमल नहीं है, तो आपके पास ये दो ज़ीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होंगे. तो 4 and 8 will be considered as significant figure. So there are two significant figure in this example. Part B, again at the end there is no decimal place, so these three zeros will not be considered as a significant figure. So there are again two significant figure in this number. No, at the end of these zero there is a decimal place, so it means they will be considered the part of the reading. So all these zeros will be considered as significant figure. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 significant figures. Now again all these zeros will be considered as significant, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस आ गई है, तो डेसिमल से पहले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है और डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है. So 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 significant figure in this number. So without decimal and with decimal का फ़र्क आपको समझ आ चुका होगा. So इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपने कैलकुलेशंस करनी है, जब आपके पास क्वेश्चंस आने हैं, तो ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे. लेट्स डिस्कस डेसिमल प्लेसेस. सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल तो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. डेसिमल प्लेस नंबर में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, बिफोर डेसिमल एंड इट इज़ कॉल्ड इंटीजर पार्ट, और आफ्टर डेसिमल इट इज़ कॉल्ड द डेसिमल पार्ट. सो डेसिमल प्लेसेस are considered after decimal. So 0 is the first decimal place, 2 is the second decimal place, 6 is the third decimal place, and 9 is the fourth decimal place. So there are 4 decimal places, 0, 2, 6, 9. और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल स्टार्ट फ्रॉम 7. All these digits are the significant figure. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are the 7 significant figure. All these numbers considered as a significant figure. I hope इस स्लाइड में आपको डेसिमल प्लेसेस
और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस का पता चल चुका होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नॉन ज़ीरो, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जो डेसिमल प्लेस हैं वो हमेशा आफ्टर डेसिमल स्टार्ट होते हैं. लेट्स प्रैक्टिस few questions. State the number of significant figures and decimal places in each of the following. This is a number, significant figure, and decimal place. Now you can write on your copies, okay, how many significant figure and decimal places in all these four numbers, and check your answer. So significant figures 1, 2, 3, 4, 5. Decimal places started after decimal 1, 2, 3, 7, 8, and 9. So 3 decimal places. Now significant figures, these will not be considered as significant figure. 2, 7, 5 are significant, so 3. But all these are the decimal places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 significant 6 decimal places. No, all these are the significant figure 4, but there is no decimal place. So there is no decimal place here in this number. All these numbers are considered as significant figure because these zeros are packed between 1 and 2 non-zero के दरमियान है. So 1, 2, 3, 4, 5. So how many decimal places? 1, 2, and 3, because these are started after decimal. So there are 3 decimal places. So I think these examples are very helpful for your understanding. एंड पे लर्न बाय हार्ट, आपने ये रूल याद करने हैं, 5 के 5, ऑल 5 रूल्स यू मस्ट लर्न बाय हार्ट. और डेसिमल प्लेस को भी याद करना है कि ये कंस्ट्रक्टेड आफ्टर decimal places, after decimals. So that's all for today. See you in next lesson. लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, होम टास्क दे के जा रहा हूँ. इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरे साथ रब्ता करें. आई विल आंसर यू. Thank you. See you in next lesson.